Hello, everybody. I hope you all are fit, fine, healthy, and well. This is part 2 of the chapter, which is named as Weather, Climate and Adaptation. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वेदर क्या होता है देन we have discussed about how we can understand more about the weather, right? Okay, so in this video we will start from the part which is climate. इसमें इमेज में दिख रहा है that how climate is exactly, right? So we'll know that what is actually climate is. इसके definitions को भी देखेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने discuss किया था the definition of weather. Then we have discussed how can we determine or how can we understand about weather through the elements of a weather, right? Now we'll begin from the next part, which is climate. So this can make you summarize about whatever we have learned in the previous video. I hope it is. तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम दी क्लाइमेट. क्लाइमेट का डेफिनेशन कहाँ गया, ये रहा. सो क्लाइमेट क्या होता है? ये होता है एवरेज डेली वेदर ऑफ एन एक्सटेंडेड पीरियड से 25 ईयर्स ऑफ टाइम एट अ सर्टन लोकेशन. किसी भी प्लेस का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक का जो वेदर होता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज द क्लाइमेट. ठीक है, जैसे कि सीजन्स हो गया. सीजन्स के तौर पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा हमें क्लाइमेट के बारे में. सो हमें बताया जाता है दैट समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, राइट, ऑल दीज सीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. सो इसमें क्या होता है क्लाइमेट में कि ये एवरेज होता है, एवरेज डेली टेम्परेचर होता है, जो कि मतलब समझ लो कि इतने साल तक 25 ईयर्स तक एक ही वेदर, एक ही तरीके का क्लाइमेट फॉलो होगा. दैट इज़ ओनली नोन एज द क्लाइमेट. whereas weather is the day to day state of the atmosphere. weather जो है वो day to day changes होते हैं and climate जो है it is the average daily weather change, okay, for an extended period, say 25 years of time at a certain location. Clear? Now meteorology क्या होती है? Meteorology is the scientific study of the atmosphere जो कि focus करता है on the study of weather and forecasting. In order to forecast the weather of a particular place, it is important that the elements of weather are regularly monitored. तो भाई elements of weather हम लोग already पढ़ चुके हैं, which is temperature, humidity, precipitation, sunshine and wind movement. And we have also seen all the instrument which is used for the respective change. Now we'll start from the factors which are affecting the climate. सबसे पहला जो फैक्टर है सब इम्पॉर्टेंट होता है. ये सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज they affect the day-to-day weather and long-term climate of a region, of a given region, as discussed below. So first it will be distance from the equator. अब ये क्या है? इक्वेटर हम लोग जानते हैं अर्थ का जो मिडल में से जो लाइन खींच दिया जाता है दैट इज ओनली इक्वेटर, राइट. सो जो इक्वेटर होता है you will see that the climate of a place gets colder as we move away from the equator. जितना भी हम लोग equator से move away हो जाएंगे, आगे जाएंगे, हम लोग को दिखेगा कि जो place है that places are colder. The areas around the equator receives direct sunlight. बहुत ज़्यादा directly उनको sunlight receive होती है जो भी equator के आसपास के regions होते हैं. They get direct sunlight from the sun throughout the year. Additionally, जो sun rays होते हैं they travel a longer distance through the atmosphere to reach surface of the earth at the poles, contributing to this phenomenon. As a result, there is hot and humid climate in places between, अगर हम लोग देखें तो Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn latitudes में hot and humid climate रहता है. ठीक है. In addition, the presence of ice and snow near the poles reflects the solar energy, also contributing to the cold. Next we'll talk about the altitude. ये सबसे आसान पार्ट है. क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. जैसे कि जितना हम लोग हाइट ऊपर, जितना हम लोग ऊपर जाते हैं हमारा जो ऑक्सीजन है, हमारा जो एयर सप्लाई है वो कम होता जाता है. हमारा जो so you can say like temperature of a place decreases with increasing altitude. Clear?
टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज होता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर इन ऑल्टीट्यूड. दिस इज वाई अगर हम लोग बात करें सर्टन इवेल्युएटेड प्लेस जैसे कि हो गया हमारा माउंट किलिमंजारो आर नियर द इक्वेटर, दे रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं they generally remain cold throughout the year irrespective of their geographical locations. Next we'll discuss about the distance from the sea. ये भी एक बहुत important factor है because climate of two places in similar latitudes and altitudes could vary depending on their distance with the ocean or sea. तो पानी से कितना दूर और कितना पास जो पानी बोल रही हूँ ओशंस और सी से जितना पास और जितना दूर है होता है दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द क्लाइमेट बिकॉज क्लाइमेट जो होते हैं दे आर सिमिलर टू लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स एंड दे कुड वेराई डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस. ओके, वाटर बॉडीज जो हैं वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं एंड कूल डाउन हो जाते हैं मच स्लोली देन द लैंड, राइट. हेंस कोस्टल एरियाज टेंड टू बी कूलर इन समर. कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो समर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं एंड वार्म होते हैं इन दी विंटर. Glasgow, for example, is at similar latitude to Moscow but is much milder to winter because it is near to the coast than Moscow. Next we'll discuss about the fourth factor which is ocean currents and wind. Ocean currents and winds. Currents मतलब currents नहीं हो गए, windy है, ठीक है, हवा जो होती है. So both oceans और जो currents होते हैं, both ocean currents and जो winds होते हैं ये भी affect करते हैं temperature को of a place by transporting their heat or coldness into adjacent region. For example, अगर Gulf Stream की बात किया जाए तो Gulf Stream is a warm ocean current that keeps Britain warmer and wetter than other places in continental Europe. अगर दूसरी जगह पे बात करें अगर हम लोग कनाडा की तो ये हमेशा ठंडा रहता है, फ्रोजन रहता है बिकॉज ऑफ द फॉर सेवरल मंथ बिकॉज इट इज़ वॉश्ड बाय द कोल्ड करेंट्स सच एज कोल्ड लैब्राडोर करेंट्स. ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और पार्ट की विच इज देखो आ गया नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल. Dense vegetation and forestry contribute hugely to bring down the temperature of a particular place. During the daytime अगर हम लोग देखें तो ट्री जो होता है वो कुछ वाटर को लूज करता है to make the air cool, okay, which is present above here. So this also raises the relative humidity of a area and contribute to increased precipitation. वेट सॉइल्स लाइक जो होता है हमारा क्ले वो रिटेन करते हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं एंड वार्म अप और कूल डाउन मोर स्लोली मेकिंग अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. ठीक है, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. नेक्स्ट थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द सीजन्स ऑफ द अर्थ. बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं दैट अर्थ जो है वो बहुत सन के बहुत क्लोजर होता है, राइट, in the time in the summer season, okay, and farthest यानी कि दूर रहता है in winter seasons. But this is only a myth. It is true कि अर्थ जो है अर्थ का जो ऑर्बिट जो है it is not a perfect circle but it is elliptical, okay. इसीलिए हमारे डिफरेंट इसीलिए जो मतलब दिस इज ओनली अ रीज़न डिफरेंट रीज़न फॉर अर्थ सीजन. ठीक है, Earth's axis जो है it is an imaginary pole which is growing throughout the center of the Earth's parallel to longitudes. Earth क्या करता है, spin करता है around its pole making one complete turn each day. Our Earth has seasons because its axis does not stand up straight and is tilted one side at 23 degree 45 minutes. As Earth orbits the sun, its tilted axis always points on the same direction. Subsequently, different areas of the Earth point towards or away from the sun at different times of the year. Around 21 June जो नॉर्थ पोल होता है ये टिल्ट हो जाता है towards the sun and northern hemisphere जो है उसको बहुत ज़्यादा sun की
डायरेक्टली रेज मिलती हैं. एंड दिस इज़ वाई जून, जुलाई एंड अगस्त आर समर मंथ्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एट द सेम टाइम क्या होता है कि हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर के जो पॉइंट्स हैं which is away from the sun, creating winter during the months of June, July, and August. Summer in the southern hemisphere is in December, January, and February, when the south pole is tilted toward the sun and the northern hemisphere is tilted away. Clear? Okay. So, I hope you all have understood whatever I have said about the reason, about the seasons of the earth. अब इस इमेज से थोड़ा बहुत समझ में आएगा whatever I have explained you. Here we can see that earth is there, कितना tilted है, right? And किस जगह पे जा रहा है और कौन सा season form कर रहा है, like that, right? Okay. So, I hope you all have understood till here. Let us keep our discussion till here only. Thank you everybody for watching my video. This is part 2 and part 3 में हम लोग discuss करेंगे थोड़ा बहुत about that adaptation, and I will try my best to complete the chapter as fast as possible. या तो next video में या फिर part 4 में मैं इस chapter को ख़त्म कर दूँगी, ठीक है? So if you have not liked and subscribed to my channel, please go and do it. Thank you everyone for watching my video.